Bonjour mes étudiantes. So let's continue with the culture most important 30 questions part 2. I'm again repeating बेटा, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको सिर्फ ये 30 questions learn करने हैं. You have to learn all the question answers of all the chapters thoroughly, okay? But these are the most important questions, so you have to learn these questions very, 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 very thoroughly, okay? So let's continue with question number 13. It says nommez quelques rubriques dans le journal. Rubrique का मतलब होता है बेटा columns and journal means newspaper. So what are the columns, or you can write the name of the columns of a newspaper. So my answer is Les Faits Divers, La Météo, Le Sport, Economy, Culture, La Politique, etc. So you can write any 4 or 5, you will get full marks. Okay. Now next question is donner an exemple the hebdomadaire mensuel et quotidien. This question में they have asked only to give the examples of hebdomadaire, mensuel and quotidien. All right, so I have only mentioned the example, but yes, they can also ask you the definition of all these three terms or difference between any two definitions. You have to learn the definitions as well, beta. Okay, so Le Monde is a journal. Quotidien means daily. Le Monde is a newspaper which publishes daily. Express is a magazine, hebdomadaire, weekly, and Reader's Digest is a magazine, mensual, that is, it comes every month, monthly. All right, Bacha. Now, let's see next question. Qu'est-ce qui constitute les médias? Again, very important question. Or à quoi servent les médias? What consists of the media? Media consists of three things: the TV, the radio, and la presse écrite, your printing press. And what are the uses of media? So media gives us, the media nous donne, gives us the news, media gives us the news, and it influences the public opinion. Okay. All right. Now, question 16 says, what are the genre de film, types of films that you know? You have to mention different types of films, and you have to mention few names of few radio and French TV channels. All right. So types of films, you know, adventure films are there, science fiction films are there, policy are there, detective movies are there, comedy movies are there. All right. So I have just mentioned these types of films, and a few radio channels are Europe 1, RF1, France Musique, Radio, etc. And few TV channels you can write Art, Canal Plus, TVS, Paris Premiere, etc. Okay. So very important question. Otherwise, they can ask you this thing in fill in the blanks or in matching as well. Now, question 17. Que savez-vous du musée du Louvre qui a construit une grande pyramide devant le Louvre au centre de la cour Napoléon? तो म्यूजिक du Louvre के बारे में आपको लिखना, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, so what will write? Le musée du Louvre, it is the biggest museum of the Paris. Autrefois means in older times, पहले past में it was the palace of the king of the France, but now it is a renowned museum. All right, worldwide, mondial. All right, and since the siècle यानी 2 century से ये म्यूजियम के हमने उस पैलेस के आगे म्यूजियम को कंस्ट्रक्ट किया है, और राइट, पिरामिड की शेप में. और इनको किसने बनाया था? इयो मिंग पी. ही कंस्ट्रक्ट द ग्रैंड पिरामिड इन फ्रंट ऑफ द लूव्र. ओके, सो दे कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन एज वेल. म्यूजियम और से तो लास्ट आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे, प्रीवियस ईयर का उसमें भी पूछा है, उससे लास्ट पेपर देखेंगे, उसमें भी दे हैव आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन. सो ल म्यूजियम और से सत्रु व पारी, ये पेरिस में है अगेन, और यहाँ पर जो है इम्प्रेशनेट पेंटिंग्स यू कैन सी. ऑलराइट, सो दैट्स व्हाट आई हैव रिटन. ओके, नोमे quelques tâches ménagères que vous faites. ताश मेनाजर मीन्स हाउस होल्ड वर्क. ठीक है, तो ये क्या होते हैं? आई हेल्प माई मदर इन कुकिंग. मैं मम्मा की कुकिंग में हेल्प करती हूँ, घर के कामों में हेल्प करती हूँ, शॉपिंग में हेल्प करती हूँ, यूटेंसिल्स में हेल्प करती हूँ. सो दैट्स व्हाट I have written, and you have to learn this question, Vicha. Next important question is, comment vous faites le jardinage? Jardinage is gardening. How you do gardening? All right. So, je sème des grains, the fleur, et je plante des bulbs. I sow the grains and the flowers, and I plant the buds. All right. Then, je taille le rosier. I shot or I cut the roses, and I water the plants. J'arrose le jardin. Le jardin will be flourished in printemps, spring में गार्डन जो है वो हरा भरा हो जाएगा, फ्लरिश्ड हो जाएगा. All right, question 21 says, à quoi sert la carte Paris musée? ये जो म्यूजियम कार्ड है, इसके क्या यूजेस हैं या क्या क्या कर सकते हैं हम इससे? So this card
allows us to access together all हम जितने भी expositions है, paintings हैं, हम वो वहां पे जाके म्यूजियम में हम देख सकते हैं. ऑलराइट. ओके, जैसे यहाँ पर इंडिया में होता है, हम एक टिकट लेते हैं. फॉर एग्जांपल हमें साइंस म्यूजियम जाना है, वी परचेज अ टिकट. ऑलराइट, तो वहां पर ये एक म्यूजियम कार्ड देते हैं, जिससे आप जाते हैं, उस कार्ड से एंट्री कर लेंगे और फिर वहां पर आप सारी जितनी भी उनकी एक्सपोजिशंस लगी हुई हैं, यू कैन वॉच. All right. Again, very important question. I told you many times, social security क्या होता है, हमने चैप्टर में भी डिस्कस किया था. ये आपका मेडिक्लेम कार्ड काइंड ऑफ थिंग आपको लर्न करना है. एज इट इज ये क्वेश्चन लर्न करना है. ठीक है, तो ये सिक्योरिटी सोशल, ये एक ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो एश्योर करती है कि कोई भी पर्सन जो जॉब पे है, इन बिटवीन अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम होती है, अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे. आपके जो हॉस्पिटल के बिल्स है वो सब देंगे. ठीक है, और उसके बाद आपको रिटायरमेंट भी देते हैं. ऑलराइट. Now, question 23, very important. इसका लेटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है. How to be in a good form, how to be in a good shape. तो उसके लिए drink lot of water, eat a lot of vegetables and fruits, do exercise like yoga or aerobics, play sports and sleep well. All right. Question 24 says, how can we protect environment? Again, very, very important question. And the letter of this chapter is also very important. How to save our environment, or how people are destroying the planet or the earth. Okay, so how can we save planet? It is necessary to reduce the gaspillage. Gaspillage is wastage of water and electricity and other natural resources, and plant more and more trees, and stop arrotes to stop the deforestation. Put the dishet is your garbage in a covered dustbin. Do not throw the garbage in the rivers. Protect the biodiversity, and we must reduce the réchauffement climatique. It means global warming को हमें रोकना बहुत जरूरी है. Okay, question 25 says, how can we conserve water? Water को कैसे save कर सकते हैं? So we can give the water to the plants in the evening. शाम के टाइम हमें पानी देना चाहिए, जिससे हम वाटर को सेव कर सकेंगे. ऑलराइट. एंड वी कैन क्लोज द रोबिनेटिस टैप. टैप को क्लोज कर दीजिए. ऑन न पा बजुआ, जब हमें उसकी जरूरत नहीं है, व्हेन वी डोंट नीड इट. तो ऐसे ही टैप को ऑन करके नहीं रखना है. क्वेश्चन 26 सेज, qu'est-ce से protéger l'environment? Okay, what do you mean by this term, protecting an environment? So से protéger notre source de nourriture, जो भी हम खा रहे हैं, ये जो भी हम ड्रिंकिंग वाटर पी रहे हैं, जो भी हम पानी पी रहे हैं, अगर हम उसको सेव नहीं करेंगे, then otherwise all the pollution one day comes in that. देखिए, जो भी हमें चीजें हैं खाने पीने की नेचर से मिल रही है, और नेचर में अगर हम इतना पॉल्यूशन कर देंगे, तो सारा के सारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर ही जाएगा. ठीक है, तो इसीलिए हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑलराइट. Question 27 says, how to stop the global warming? Again, lutte means fight against the deforestation. Fight against deforestation. अब हमें रोकना पड़ेगा. हमें क्या करना है? रिड्यूस करनी है एनर्जी कंजम्पशन को, और ज्यादा से ज्यादा ग्रीन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमें यूज करने चाहिए. ऑलराइट. Question 28 is, who is the president and the prime minister of the Republic France? So you all know that Emmanuel Macron is the president of the Republic France, and Francois Bayrou is the prime minister of the Republic France. So you can mention it. Now, who elect the president in India, and for how many years? So president in India is elected by the members of parliament and the members of legislative assembly, and for 5 years. All right. And who elect the president in France? It is elected by the citizens of France. Okay, and again for 5 years. Don't get confused in both the questions. Now, last, again very important question. Last year भी we can see this question. I think उन्होंने सैम्पल पेपर में भी इस साल CBSE ने ये क्वेश्चन पूछा है. Give few responsibilities of French president. So he represent the pays entire country को represent करते हैं वो. When he is traveling officially to the foreign abroad, he speaks the name of the France and all the French people. For example, Emmanuel Macron, we can say he's coming to India. All right. तो वो ये नहीं बोलेंगे कि मैं Emmanuel Macron, मुझे अपने लिए ये डील साइन करनी है. No, he will use the name of the France. He'll use the name of his own country, the people of all the France. Okay. तो वो उनको लेकर रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. सेम
किसी भी कंट्री का अगर प्रेसिडेंट जाता है, प्राइम मिनिस्टर जाता है, तो वो पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ही अपॉइंट्स द हाईएस्ट पर्सनालिटीज ऑफ द स्टेट। जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है वो ही वहां पे प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट करते हैं, एम्बेसडर्स को सिलेक्ट करते हैं, अपॉइंट करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, ओके। ही इज ऑल्सो द चीफ ऑफ द आर्मी। और जो फ्रेंच के प्रेसिडेंट है, फ्रांस के प्रेसिडेंट है, ही इज ऑल्सो द चीफ ऑफ द आर्मी, ठीक है बेटा। तो ये कुछ 30 क्वेश्चंस है विच आई हैव फाउंड आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर वो क्वेश्चन पेपर्स में यही पूछते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी, एंड दिस ईयर ऑल्सो इट इज वेरी वेरी useful. So keep learning and follow for more. Merci.